Assalamu alaikum, grade 8. How are you? Faiza Nadeem with your English lessons. And you know that before I start my lesson, what do? I ask about your health. I ask whether you are hale and hearty. I ask whether you are enjoying your life or not. But what do I tell? After asking all these questions, I tell you to be good. A good Muslim, a good brother, a good son, a good Muslim, a good daughter, and a good sister. Right? So let's start our lesson without further ado. जी मेरा बहुत प्यारा बेटा और बहुत प्यारी बिटिया. What is the board telling you? The board is telling you to take your Oxford Progressive Reader out, right? And open its unit number 3. Unit number 3 is all about mysteries. और जो पहली मिस्ट्री हमने की थी वो कौन सी की थी? शार्लक होम्स. कौन सी ऐसी मिस्ट्री है जो शार्लक होम्स के बगैर मुकम्मल हो? और उसके बाद हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में की थी पोम. The listeners, आज हम कर रहे हैं मिस्ट्री स्टोरीज इन द न्यूज, जो है पेज नंबर 68 से पेज नंबर 74 तक. ये मिस्ट्री स्टोरीज क्या है? ये 2 स्टोरीज हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, न्यूज आर्टिकल्स रिगार्डिंग द मिस्ट्रीज दैट वर हैपनिंग ओवर देयर लोकली. एक जो मिस्ट्री है वो ये है कि लाइब्रेरी का ड्रॉर जो होता है वो लॉक होता है. ठीक है, वो एक पुरानी चर्च की लाइब्रेरी होती है. उसमें बहुत पुरानी एंटीक हजार साल पुरानी बुक्स होती हैं. वो डोर लॉक होता है, कोई उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता, फिर भी अंदर खामोशी से चुपके से बुक्स गायब हो रही होती हैं. बड़ी सर्च करते हैं. फाइनली वो जब सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं तो उनको उस चोर का पता चलता है. वो चोर कौन होता है? वो चोर लाइब्रेरी का ही एक टीचर होता है, जिसको एक बहुत पुराना मैप मिल जाता है मिडीवल टाइम्स का, जब वो चर्च नया कंप्लीट हुआ था. और वहां से उसको एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है लाइब्रेरी में एंटर होने का. वो उस सीक्रेट पाथवे से लाइब्रेरी के अंदर एंटर होता था, सारी रात बैठ के किताबें पढ़ता था, उसके बाद उनको अपने सूटकेस में बंद करता था, आराम से नीचे उतर के अपनी साइकिल पे बांधता था और घर ले जाता था. 1100 बुक्स उसने इस तरह से वहां से चुराई थी. ठीक है, पहला न्यूज़पेपर आर्टिकल आपका उसके बारे में है. दूसरा न्यूज़पेपर आर्टिकल एक डॉग के बारे में है. एक डॉग होता है, बैटरीसा डॉग्स शेल्टर, एक शेल्टर होम है स्ट्रे डॉग्स के लिए. वो वहाँ पर उन डॉग्स को ला के रखते होते हैं जब तक कि कोई उनको अडॉप्ट नहीं करता. वहाँ पर ये हो रहा था कि डॉग्स के जो दरवाजे थे, 4-5 डॉग्स के केजेस के, वो सुबह को खुले हुए मिलते. किचन के अंदर कोई जबरदस्त तबाही मचा के जाता, कुत्तों के खाने ख़त्म हुए हुए होते, और वो सब सख्त परेशान थे कि शायद कोई जिन भूत आ गया है जो ये काम कर रहा है. बाद में दे डिस्कवर्ड कि वो जो एक नया डॉग जिसको उन्होंने रेस्क्यू किया था, वो अपनी नोज से और अपने ऊंचे वाले दांतों से लॉक खोल लेता था, फिर अपने 4 बेस्ट फ्रेंड्स के लॉक खोलता था. उसके बाद वो सबका खाना खाते थे, किचन में जाते थे, किचन में जाके धमाल मचाते थे, खाना ढूंढते थे, आपस में मस्ती करते थे, और जब सुबह का वक्त होने वाला होता था तो चुप करके अपने अपने केजेस में जाके बैठ जाते थे. लेकिन वो कुत्ते जो थे उनको खोलना तो आया था, लॉक लगाना नहीं आया था, इसलिए उनके जो केजेस होते थे वो सुबह को खुले हुए मिलते थे. उस डॉग को उन्होंने हुडीनी का नाम दिया. हुडीनी क्या है? हुडीनी वॉज अ मैजिशियन जो ये आर्ट जानता था कि किस तरह से अपने आप को कैद से, लॉक से आज़ाद करा दे. और उसका जो सबसे फेमस मैजिक ट्रिक थी वो ये थी कि वो चेन्स में एक संदूक के अंदर बंद होके पानी के अंदर चला गया था, वहां से वो अपने आप को आज़ाद करा के लाया था. तो चूंकि वो डॉग वुड फ्री नॉट ओनली इटसेल्फ बट द रेस्ट ऑफ द डॉग्स हु वर हिज फ्रेंड्स एज वेल, ही वाज कॉल्ड एज हुडीनी. ये 2 कॉम्प्रिहेंशंस हैं, छोटे छोटे से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं इस स्पेसिफिक यूनिट का, इस स्पेसिफिक टॉपिक का, जो है मिस्ट्री स्टोरीज इन द न्यूज. सबसे पहले हम इनकी करते हैं रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फरेंस. दोनों को एक साथ ही डील किया हुआ है, दोनों से रिलेटेड एक साथ ही सवाल है, इसलिए हम दोनों से रिलेटेड एक साथ ही सवाल जवाब अटेम्प्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या? एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ गॉस मैनेज टू स्टील द एंटीक बुक्स. इसका आंसर आप क्वेश्चन से ही इसी तरह से शुरू करेंगे, दैट गॉस मैनेज टू स्टील द एंटीक बुक्स
after he found or he had discovered a forgotten map from medieval times. This map displayed a secret access which included a daring climb from the exterior walls, and then this climb would lead into a steep, narrow stairway. This stairway would enter or end at a secret chamber, and this secret chamber had a mechanism which would open the backs of the 5 cupboards, and through that secret trapdoor he would enter the library without opening the front door. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پورا آنسر فریز آؤٹ کر کے سنا دیا. اس کو تھوڑا سا اردو میں بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے یہ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, اس کو کیا ملا تھا؟ اس کو میڈیول ٹائمز یعنی بہت پرانے وقت کا ایک میپ ملا تھا. اس میپ میں ایک نقشہ تھا اور اس نقشے میں ایک رستہ تھا جو سیکریٹلی, ٹھیک ہے, لائبریری کے اندر انٹر ہوتا تھا. اس نے کیا کرنا تھا کہ لائبریری کی باہر کی دیواروں سے ایک بڑی مشکل سے چڑھائی چڑھنی تھی. جب وہ اس مشکل سے چڑھائی کو چڑھ کے اترتا تو ایک بالکل چھوٹا سا نیرو سا, ٹھیک ہے, اسٹیئر کیس تھا. وہ اسٹیئر کیس پہ جب اترتا تھا نیچے تو وہ نیچے ایک روم میں انٹر ہوتا تھا. وہ روم کے اندر ایک سیکرٹ میکینزم تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ کئی موویز میں کہ آپ اس کو ٹنگ 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 بٹنس دباتے ہیں اور ایک سیکرٹ ڈور کھل جاتا ہے. تو وہ سیکرٹ میکینزم تھا جو اس کی لائبریری کی 5 کبڈ میں سے ایک کبڈ کو کھول دیتا تھا اور وہ یوں وہاں سے لائبریری میں انٹر ہو جاتا تھا. Okay, the second question is, why did he steal them? He stole them because he thought that they were being neglected. ٹھیک ہے, and they were being undusted. ان کی ڈسٹ نہیں ہو رہی تھی. They were undusted and filled with pigeon droppings. ٹھیک ہے, وہاں پہ لائبریری میں pigeons آتے تھے, pigeon کی droppings, pigeon کی shit, ٹھیک ہے, وہ ان کے اوپر گر رہی تھی. اینڈ ہی واز تھنکنگ کہ یار اتنی ایکسپینسو, اتنی اچھی بکس ہیں, کوئی ان کو پڑھ نہیں رہا, کچھ نہیں کر رہا, یہ یہاں پہ برباد ہو رہی ہیں, خراب ہو رہی ہیں. میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں تاکہ یہ سیف ہو جائیں اور محفوظ ہو جائیں اور میں ان کا خیال رکھوں گا اور یوں یہ پروٹیکٹڈ ہو جائیں گی یہ سینچریز اولڈ بکس. ٹھیک ہے, سو دس واز وائی ہی اسٹول دیم اپ. Let's move on to the next question. Alright, could or should gauze be admired in any way? Gauze کو ہم کو admire کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, کسی بھی تعلق سے. تو we could admire gauze in a way that he had climbed, that he had dared to climb up a difficult path. ٹھیک ہے, وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ پاتھ کو کلائم کرتا تھا اور وہاں سے جا کے اسی ڈیفیکلٹ پاتھ سے اتر کے ان کتابوں کو اپنے گھر تک لے کے آتا تھا. یہ بہت ہمت کا کام تھا. Not everybody can do that. So he can be admired in this way. But then he should not have stolen. If he was a teacher over there, he should have taken care of the library books after telling the librarian. Or he could have helped the librarian in taking care of those books rather than keeping them for himself and not letting others read. Which qualities of the character did the librarian show in his attitudes towards Gauze? Gauze کو 11875 pounds کی پینلٹی پڑی تھی, ٹھیک ہے, لیکن لائبریرین نے اس کو معاف کر دیا تھا. He has forgiven him and he has even allowed Gauze to enter into the library and read the books if he would come through the main door. ٹھیک ہے, اس کو کہا کہ سیکرٹ پیسج سے نہیں آنا, مین ڈور سے آنا ہے. You are allowed to come into the library whenever you want to. تو اور اس کو یہ بھی allow کیا تھا کہ he can keep his job. So the librarian had shown a very noble attitude. ٹھیک ہے, he had shown that he was a noble man and he had shown that he was the true book lover because he had allowed another book lover to enter into the library and to read them regardless of the fact that the book lover
was being selfish and wanted the books only for himself. Right? Explain exactly what was causing the disruption which the staff found in the kitchens of Batrissa's dog home. क्या हो रहा था वहाँ पर ये हो रहा था that the kitchen was in a complete mess. It showed that the kitchen was in complete chaos. Somebody would try to steal the food and they would leave the kitchen in a great mess. So this was actually what was happening in Batrissa's dog's home. Next is, how did Rufus undo the bolt? Rufus ने किस तरह से अपने केज का लॉक खोला था? Rufus would undo the bolt with the help of his pointed nose and his sharp teeth. Rufus would undo the bolt with his pointed nose and sharp teeth. Why have the staff decided to call Rufus Houdini from now on? Because Rufus had shown the dare that Houdini had shown when he freed himself from all the chains. So Houdini was the master of freeing himself from chains, and Rufus the dog had shown the same characteristic. So Rufus had shown the characteristics of Houdini, who was the master of freedom. That is why the staff decided to call Rufus Houdini. Why do you think a member of the public might like to give a home to Rufus after hearing about this news story? अब क्यों कोई पब्लिक जो है रूफस को अपने घर में अपनी जगह पे रखेगी? क्यों? Because Rufus was fun to be around. Rufus was fun loving. ठीक है? They could have had a fun loving person over there. Again, there were magicians who could use Rufus in their magic tricks. And not to forget the pranksters who could use Rufus for their online programs, for their TikTok videos, for multiple things that you can do online. So people might be interested in Rufus after hearing what they had done to the shelter. So these were all the questions. Let's move on to the vocabulary. जी बेटा, vocabulary में उन्होंने आपको मीनिंग्स दी हुई हैं और आपको कहा हुआ है कि इन मीनिंग्स से रिलेटेड वर्ड्स आपने कॉम्प्रीहेंशन से पिक करने हैं. जैसे सबसे पहली मीनिंग जो है कॉम्प्रीहेंशन 1 से है, ठीक है, और मीनिंग है so precious it cannot be valued in money, and the word that is mentioned in the comprehension is priceless. Very large books, massive volumes. Historical records dating back. Room, flat, not looked after, neglected. Ancient, antique, outside, exterior. So these are all the words and their meanings from comprehension 1. We now move on to comprehension 2. इसके words blue में है, right? और इनकी meanings black में है. Invasions, raids, excessively thin, emaciated. The dog was excessively thin. The dog was emaciated when he reached the shelter, but he had gone quite fat after having his full meal. Video recording footage. Slap up meals, evening feast. This is what the dog and his friends do to slap up the meals. Set up freeing, searched, rifled, a great number, mass of calls. These were all the vocabulary and their meanings. They were expecting a great number, a mass of calls for Houdini, the Rufus. ठीक है? अच्छा, अब words in use में है missing, to miss, to go missing and to be missing.
یہ ورڈز آپ نے ان سینٹینسز کے آنسر میں لکھنے ہیں. کوشچنس میں نے لکھ دیے, آنسرس آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں. سنس دے آر ناٹ سو سگنیفیکنٹ بٹ وی مسٹ نو ہاؤ ٹو آنسر دا کوشچنس both verbally and written. That is why I am doing it. What happened to the 1100 precious books in the monastery library? 1100 precious books were missing from the monastery library. What did the police find in the Guz's flat? Police find the books that had gone missing from the library in Guz's flat. What were you told about the food in Batterson's dog home? The food in Batterson's dog homes were missing. Okay, they had been missing. That is why they had to put in the CCTV cameras in order to find out or catch the culprit. Let's move on to the next set of questions. How would you describe a jigsaw puzzle with 257 pieces out of 260 pieces? It would be a jigsaw puzzle with 2 pieces or 3 pieces missing. Jenny and Sana arranged to meet outside the cinema, but they failed to see each other. Why? Jenny and Sana happened to go missing. They happened to be missed in the crowd. That is why they could not meet up each other. Tawfiq's father never came back from the work one day last year. What happened to him? Tawfiq's father has gone missing after his return from his job. What do you pine for most if you had to live in another country? I would pine or I would miss my home and my family the most if I would go in another country. Tariq was hungry since morning as he had overslept. Why was he hungry? He was hungry as he missed his breakfast because he was going late. Every day we wait for Tanya, who disappeared 3 months ago. For how long Tanya has not been at home? Tanya has been missing or Tanya has gone missing since the past 3 months. At 11 a.m. it was reported that Tanya had disappeared. At what time was the police told of her disappearance? The police was told that Tanya was missing at 11 a.m. Right? To be missing, or to have been missing. We have constructed the answers to all these questions. Let's quickly recapitulate today's lesson. What did we do? We did the newspaper articles about the 2 mysteries that were solved with the help of the CCTV cameras. We did reading for understanding and reading for inference and vocabulary, and gave the oral answers that were all filled with or that all had missing in them. اپنا خیال رکھو, ہنستے کھیلتے رہو. انشاءاللہ we'll meet up again. By that time comprehension کو attempt کرنا, read کرنا, enjoy کرنا. ٹھیک ہے, اپنا بہت دھیان رکھنا, نمازوں کی احتیاط کرنا, اور فائزہ ندیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. اللہ حافظ.